हाँ जी, वेलकम बैक टू टॉप कॉर्नर। आज हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट ट्रांसफर्स की, लेटेस्ट ट्रांसफर, बड़े रूमर्स की एंड थोड़ी बहुत वियर्डनेस की भी। बट सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत लाइफ चेंजिंग, बहुत गेम चेंजिंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना ट्रेनिंग ग्राउंड रिवैम्प किया था 50 मिलियन पाउंड। उस ट्रेनिंग ग्राउंड में इट इज रिपोर्टेड that there is going to be their own barber shop as well. Now Yes, that is transformative football. that is. बाकी सब कुछ एक तरफ, बाल सही लगने चाहिए भाई मैच में, मैच से पहले। उनके एंड मेरे पास शिवम नहीं. द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, एज यू कैन क्लियरली सी, विल टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ बार्बर शॉप, Yes, I think it's. I think it was high time. Training facilities were upgraded. है ना? नया स्विमिंग पूल आया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टेटमेंट के 2-4 साल वो बाद. सब बट इमटेरियल है, वो सब बट इमटेरियल बट है, तुमने बट ना ही रखा है। फाइनली हाकिम आलिम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर दुकान खोल ली. यस, 99 रुपए के कट. the इन the इन the essential, like the essence of this particular information is what now I feel is players like Sancho and Rashford would like to stay in United. There are players who need a trim before every freaking match. Garnacho, Sancho, Pogba ऐसा था, रैशफोर्ड. क्या आई बोल एम रहे हो श्योर हर आप? क्लब में कोई ना कोई ऐसे होते हैं जिन्हें भाई, मैच में से पहले ये I'm चाहिए. sure there are a lot of Manchester United players who can do with a makeover as well. Case in point, Joshua Zirkzee. He could do one. He could do one. Yeah. Bruno needs a Maybe new Bruno. look. Hoyland, Garnacho. Garnacho ने blonde हुआ था just before the Europa League final. It did not work out. Maybe he should try brunette or something. I don't know. Maybe he needs to try a new club. but do you guys think this will attract new generation players to the club? Yeah, I absolutely, think it absolutely. would. And अट्रैक्टिंग न्यू जनरेशन से याद आया, हाँ. इन लोगों ने अपना बार्बर शॉप डाला है 50 मिलियन के ट्रेनिंग ग्राउंड का रिवैम्प में, बार्बर शॉप डाला है। एंड द फर्स्ट प्लेयर दे हैव मैनेज्ड टू साइन इज बॉल्ड, ब्रायन एम्बुएमो। That is the main topic, by the way, guys. I know हम लोग बकैते कर रहे हैं पिछले 2.5 मिनट से, but that is the main topic. Brian Mbeumo has signed for Manchester United finally after a Finally. protracted transfer saga Brentford के साथ. I know Manchester United ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, but Fabrizio Romano का here we go आ ही गया है, तो मान ही So सकते हो, we, might as well. हाँ, हम उसको ऑफिशियली मान लेते हैं. Anyone in football would take that officially. Well, Few words on him, so few words please, on this transfer. please, The please, please. the whole point is not that we've signed Mbeumo. For me personally, it's not that we signed a proven Premier League player. It is the fact that we have signed someone final. Any United fan, every United fan, we were bloody desperate. यहाँ से लिवरपूल 5 साइनिंग कर चुकी है, छठी 7वीं चाहती है, पैसा ऐसे उड़ रहा है. चेल्सी का तो पैसा ऐसे ही उड़ता है वैसे भी. आर्सेनल साइनिंग कर रही है, सिटी साइनिंग करके बैठ चुकी है, टॉटनहैम इज मोर इन सिटी द तो रुक ही मार्केट नहीं देन रहे ना वी वर. भाई। इट जस्ट फील कि बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल लवारिस छोड़ दिया है यूनाइटेड को, कि मतलब कोई ध्यान ही नहीं देगा इस बच्चे पे. फाइनली वी हैव क्रॉस्ड that finishing line with this player that we've been after for a while. They were reports for the delay have been because I think Brentford were looking for a new manager, of course, thanks to Tottenham. They were also considering either Biomo leaves or Juan Vissa leaves, one of the two. So I think they're There is going a for chance both Hutchinson. will. There is a chance both They will. are trying not, but I think Hutchinson will they're going to go for that. And of course, they wanted more money, which they've also received. So good for Brentford. Is it good for United? We needed more players in attack. So yes, that's a good thing. See, Better to be quality very in fair, attack. So यूनाइटेड ने that's a good. इस ट्रांसफर विंडो में अभी तक 2 साइनिंग्स करी हैं. वन और इज दोनों forward. Nia from Wolves, and one is Wolves this and Mbuemo now from Brentford. Brentford. And both are immediately players who can immediately improve your playing 11. Your forward Yes, line they do. immediately gets a boost Immediate. on both wings, in fact. They So do. that is a good signing, to be very fair. However much I hate saying that, but Manchester United is stronger with these 2 signings, We definitely. are. And But Mbuemo that is was one of also the today because he top was. performers in the league last year. Also, at this point in time, अगर आप राइट विंगर्स की बात करो, लेफ्ट फुटेड राइट विंगर्स की बात करो, लीग में सलाह इज ऑब्वियसली द बेस्ट. उसके बाद एम्बुएमो हैज बीन अ गुड चैलेंजर टू साका फॉर द सेकंड पोजीशन इन द लास्ट सीजन. Especially last season. I would say Exactly. especially last season. Exactly. So he is going to be a very good addition, but we have seen
Manchester United being the graveyard for a lot of Oh, very yeah. talented players. So थोड़ा सा तो I'm sure Manchester United fans, we like Shivam and a lot of others, are proceeding with caution in terms of let's not be too optimistic with these two signings. हाँ, But honestly, 100% on paper at least, on with the paper. current manager and with the current manager's performances on paper over his हम्म, career, मेरे ख्याल से ये दोनों automatically आपकी टीम को बहुत तगड़े तरीके से improve कर देते हैं already. Maybe a keeper and a defender and you're sorted. Mostly. फॉरवर्ड, वी Mostly. नीड अ स्ट्राइकर, वी नीड अ कीपर, वी नीड मिडफील्डर, चाहिए यार वो हमें बहुत सब कुछ। कुछ तो शायद नहीं आएगा ना एक बार में, नहीं शायद। आएगा, वही है, चाहिए बहुत कुछ, आएगा क्या वो देखेंगे। आई एम जस्ट अगेन, माई होल हैप्पीनेस विद दिस इज कि ये जो पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से कांस्टेंट न्यूज है, मे बी इवन बिफोर, फाइनली तुमने साइन किया है, हाँ, या fair. या तुम खत्म करते इसको या तुम साइन करते, ये बीच वाला Fair. सिस्टम अच्छा नहीं लगता है। माई होल Fair. हैप्पीनेस इज कि चलो कोई आया है। Fair. विल इट वर्क, विल इट नॉट वर्क, ऑफ कोर्स सुजय यू Time राइटली will tell. सेड, वी प्रोसीड विद कॉशन any player that comes to United. Alexis Sanchez was a proven Premier League player, and that बहुत है did यार, ऐसे not अब work. नाम गिनाने लगो तो फिर we'll do a separate video But on this. like, that was a But huge one. So क्या just क्या happy बोलते हो that रेक्स we've भाई? got someone. क्या बोलते हो? Mbeumo, the kind of player he is. भाई it's a good thing for United and bad thing for all the rivals. कि these two players are not young enough. They are going into their prime. So जो young players के ऊपर जो baggage होता है ना, इनके ऊपर वो नहीं रहेगा परफॉर्म करने का अपने valuation के आधार कि these players are more mature enough to perform under pressure. तो वो एक अच्छी चीज है उनके लिए। बाकी you know भैया, Brentford don't have a academy. ठीक है, they recruit player on the trials basis. तो आपको अगर याद होगा कि when United bought Harry Maguire from Leicester City, they have set up a whole academy with that money. तो United basically अभी फंड कर रही है सारे क्लब्स को कि आप लो पैसा और अपनी academy सेटअप करो। नहीं, homegrown talent लाओ, that's good. See how magnanimous we can be. nice. But to be very fair, see, जैसे रेक्स आपने बोला कि प्रेशर वाला वो बैगेज नहीं होगा. All said and done, I know United finished 15th and I don't get tired of saying that, to be very honest. But despite them finishing 15, they do remain one of the biggest clubs in the country at this point in time. तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बनेगा आने में. आप ब्रेंटफोर्ड में खेल रहे हो और वोल्व्स में खेल रहे हो और सीधा आके मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हो in front of some 70,000 people. That automatically adds a lot of pressure, no doubt about it. And we have already seen a lot of very good players succumb to that pressure. Yes. To be very honest. तो वो एक चीज तो रहेगी. But like you said, probably the maturity on their end might just help, and they're both going to be very hungry because हम अगर बात करें डिमारिया की, सैंचेज की, इस टाइप के प्लेयर्स ना ऑलरेडी काफी कुछ करके आए हुए थे. Maybe they were not hungry enough. Maybe. I'm not trying to discredit or disrespect anybody. I'm just speculating. Maybe they were not hungry enough. The likes of Cunha, the likes of Mbeumo, I'm sure they'll be a lot hungrier to prove at the bigger stage, at a higher sphere of attention. कि भाई हम लोग कुछ कर सकते हैं. Maybe that can work for United. Why not? Well, you gotta keep hoping. I think that's been the case with us, and that is going to be the case. But you're right, Sujay. Maybe that might help us, help the United fan base, the club. We'll get to see performance level क्या होगा. Just happy to see additions because चाहिए थे. Almost any player would have improved our starting 11. But yeah, these two do. So these two definitely do. But yeah, congratulations to Shivam and all United supporters out there. Yeah, that is a good Vaibhav, who's not here, he's very happy. And everybody else. आगे बढ़ने से पहले एक और चीज है, by the way, लिवरपूल वगैरह की बात करने लगे, लिवरपूल की मेनली. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भाई लोग, जो लोग देख रहे हैं यहाँ तक, पसंद आ रहा है कंटेंट, चैनल पे कंटेंट की कंसिस्टेंसी पसंद आ रही, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो. नीचे छोटा सा बटन है, एक दबाना है. बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है. आजकल तो माउस और लैपटॉप का ट्रैकिंग पैड भी बहुत स्मूथली चलता है, तो बटन दबा दो, मजा आ जाएगा सब. ठीक है, अब चलते हैं लिवरपूल के रूमर्स पे. एट दिस पॉइंट इन टाइम नथिंग इज कंफर्म्ड. वी डोंट इवन हैव अ हियर वी गो. बट जो रूमर्स आ रहे हैं फ्रॉम रेप्यूटेड सोर्सेज, सो टू स्पीक, हुगो एकिटिके इज ऑलमोस्ट डन अकॉर्डिंग टू दोज रेप्यूटेड सोर्सेज. आई एम नॉट क्लेमिंग टू नो, but it is almost done. And a lot of people are
saying कि Ekitike आ रहा है तो Nunes चला जाएगा. I just want to set one thing straight at this point in time. Due to the tragic, very unfortunate circumstances of the last month, what happened with Diogo Jota, Liverpool only has one number 9 at this point in time. That is Darwin Núñez. Technically, Hugo Ekitike might not be coming as a Núñez replacement. He might be coming as a Jota. However sad that might sound, that is the harsh reality right now. So maybe they'll have to keep both. एक जो अलग outgoing का rumor आ रहा है वो है लुइस डियाज. मैंने जो वीडियो बनाया था, शिवम ने मेरे को बाद में बोला नहीं तूने बहुत अनफेयर हो गया था. अभी तक तीसरी बिड आने वाली है बायर्न म्यूनिख से. 2 रिजेक्ट हो चुकी है, तीसरी आने वाली है. मतलब वो अभी गया थोड़ी है. मतलब मैं बार्सा का पर्सपेक्टिव बताऊं, देखो का क्या ही मतलब है उसका रिलेशनशिप इसके साथ, मुझे कुछ नहीं पता भाई. वो पड़ा हुआ है इसके पीछे. भाई हम नहीं दे सकते 75 to 80 मिलियन. हमारा अभी जुआन गार्सिया का कब होगा, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो पाना वो भी मुश्किल है. ये वेरी फेयर बार्सिलोना के नहीं आ रहे उतने रूमर्स. तुम्हारे रजिस्ट्रेशन की बड़ी दिक्कत है भाई. अभी रिसेंटली लास्ट वीक दिस वीक भी बात किया था उसने. बात तो जो मर्जी करता है, बट बायर्न इज एक्चुअली परस्यूइंग हिम very hungrily, very actively at this point in time. Okay. They do need wingers, to be fair, and there is a chance that Diaz will eventually force a move out. And if that happens, there are again strong rumors that Liverpool are in for Rodrigo from Real Madrid. As a Liverpool fan, honestly, I'm very happy. Why not? We're getting a younger Diaz basically. I know Rodrigo भैया बहुत ही ज्यादा डिमांड करेगा सैलरी. मालूम मुझे, बहुत ही ज्यादा. देखो कर रहा है उससे तो डबल ही करेगा वो. देखो लिवरपूल का एक चीज तो सेट है, सैलरी डिमांड दे विल नॉट गिव इन इतने आराम. हाँ, दे हैव नॉट गिवन इन, दे विल नॉट गिव इन. तो अगर तो ज्यादा डिमांड करेगा इट विल फॉल थ्रू इवेंट इफ दे कांट गेट to a common ground. Basically, what I'm trying to say is this can be a very good addition to the Liverpool squad, this young Liverpool squad, honestly, because अगर डियाज चला जाता है तो हमारी टीम में पेस नहीं है. लिवरपूल के पास पेस है ही नहीं. साला इज ऑल्सो नॉट गेटिंग क्विकर एनीमोर. ऐसा कुछ वो नहीं है. ही इज ऑलरेडी रीच्ड हिज पीक पेस. एंड उसके अलावा डियाज चला गया तो आपका लेफ्ट विंग तो सिर्फ गैकपो ही रह गया. आपके पास पेस है ही नहीं, क्या करोगे उधर. तो यू डू नीड विंगर्स. इवन इफ Diaz doesn't happen, maybe a few others can be looked at. But agar Rodrigo doesn't happen, but if Diaz goes, they need wingers. Definitely, they need wingers. And at this point in time, I think the best available on the market probably is Rodrigo. If he is available, I think he's available. I think he's available. Real Madrid have. He hasn't been playing for Real Madrid a lot. वही क्या है? क्लब वर्ल्ड कप में भी कहाँ खेला है? कितना ही खेला वो? हाँ, तभी आई थिंक वो सिस्टम में भी शायद नहीं जा रहा उसके चैंपियन वही तो. दैट शुड बी इंटरेस्टिंग एज अ ट्रांसफर. क्या बोलते हो, होगा रोड्रिगो? आई वुड से पॉसिबल. मतलब ऑफ कोर्स देयर आर कंडीशंस. Rex has said salary demand और वो बड़ा होगा, but what I feel Rodrigo is more than capable enough. What he is not getting at Real Madrid is the superstar status. Player वो अच्छा है, वो वहाँ पे उसको वो status नहीं मिल रहा है. वो नहीं मिल रहा ना, गेम टाइम नहीं मिल रहा, सुपरस्टार स्टेटस नहीं मिल रहा. उसकी फेवरेट पोजीशन इज ऑफ द लेफ्ट, और उस पोजीशन में उनके पास ऑलरेडी विनीसियस जूनियर भी है, एम्बापे भी वही मरा रहता है जब सेंटर फॉरवर्ड है. लेफ्ट स्पेसिफिक अटैकर. Rodrigo starts on the right, and maybe again if he's not fitting into the plans, then maybe that can be a good deal for Liverpool. क्या बोलते हो रेक्स भाई, फिट हो जाएगा बढ़िया से? भैया देखो, अभी तो उनके पास अबंडेंस में टैलेंटेड प्लेयर्स है. एक तो 17 साल का अभी मस्तन रोनो किया है, उन्होंने साइन किया है. फिर उसके ऊपर गुलर को भी खिलाता है, वो राइट साइड में खिलाता है ज़ावी अलोंसो. फिर उसके बाद उनके पास ऑप्शन कितने हैं आप देखो, ठीक है. ब्राहिम डियाज है, फिर अभी उसके साथ साथ कौन है अभी जो 2 बच्चे जो खेल रहे हैं, भूल गया, गार्सिया ब्रदर्स, भूल गया मैंने उसका नाम. हाँ, गोंजालो गार्सिया तो है, लेकिन यार जो बॉबी जर्मन जिसको बोलते हैं यार, मैं भूल गया उसका नाम. वो तो एंड्रिक नहीं, एंड्रिक. हाँ, तो ऑप्शन तो बहुत अबंडेंस में उनके पास. वो चाहे तो एक प्लेयर को लेट गो कर सकते हैं, और वैसे ही पैसा मार्केट वैल्यू में तो उसका 90 मिलियन तो वो मांगेगी, मिनिमम 90 मांगेगी.
There is तो there अच्छा is ही a है उनके chance लिए। they will want Konate as a part of the deal. There might be because they are fairly interested. They are quite interested in Konate. तो अगर वो हुआ तो तब देखना होगा लिवरपूल का क्या स्टांस रहता है. किसी ने रिपोर्ट किया That था will ना actually be a कि test. That will be a if test. this happens, कि I'll tell you, I think what will be the most interesting bit about this whole thing is the back and forth transfer negotiations between Liverpool and Real Madrid. हमने ट्रेंट के साथ वो देख ही लिया. It can be very fun. It Yeah. can be amazing. like बहुत बहुत मजा आएगा फिर उस सिचुएशन में. मेरे ख्याल से It आने will- वाला it वीक will शुड be बी a lot of वेरी back and forth. इंटरेस्टिंग फॉर द ट्रांसफर मार्केट बिकॉज अभी तो हमने आज बात नहीं करी है, टाइम नहीं बचा इसलिए. नहीं तो टॉटनहम की भी बात करनी है. विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट व्हाट टॉटनहम आर डूइंग इन द ट्रांसफर मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि मॉर्गन गिब्स वाइट का काफी इशू चल रहा था. वो भी अभी थोड़ा थोड़ा रिजॉल्व होना शुरू हो गया अपेरेंटली. Has it started to resolve? या हाँ सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स देयर. अगला एक हफ्ता मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ऑल द टीम्स आर अबाउट टू लीव फॉर डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब फॉर देयर प्री सीजन. एंड आई एम श्योर उन सबको यही चाहिए होगा कि भाई मेन जो साइनिंग्स हैं पहले निपटाओ, ताकि उन नए प्लेयर्स को उन प्री सीजन टूर्स पे लेके जा सको. जैसे आई डोंट नो यूनाइटेड कहाँ जा रहे हैं, लिवरपूल आर गोइंग टू एशिया, ये सिंगापुर साइड कहीं. हाँ बार्सा इज आल्सो गोइंग टू एशिया, टॉटनहम भी जा रही है. यूनाइटेड का नहीं पता मुझे कहाँ जा रहे हैं ये लोग. यूएस जा रहे होंगे मोस्ट लाइकली. तो आई एम श्योर दे वुड वांट टू परेड देयर न्यू साइनिंग्स अराउंड बिकॉज प्री सीजन बेसिकली यार इतने लंबे लंबे प्री सीजन करने का एक ही रीजन होता है, कमर्शियल वैल्यू. एंड उस कमर्शियल वैल्यू के अंदर आप अगर अपने नए साइनिंग्स को परेड ना कर सको तो दैट माइट नॉट बी द बेस्ट आइडिया. तो आई एम श्योर अगला एक हफ्ता विक्टर ग्योकेरेस टू आर्सेनल मेरे ख्याल से अनाउंस हो जाएगा इस हफ्ते में. बहुत क्लोज है अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू दीस फैब्रिजियो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन एंड ऑल. एकेटीके मेरे ख्याल से अनाउंस हो जाएगा. आई डोंट थिंक रोड्रिगो अनाउंस होगा टू बी वेरी ऑनेस्ट. टॉटनहम के एक दो साइनिंग्स अनाउंस हो जाने चाहिए नेक्स्ट वीक में. आर्सेनल का एक और साइनिंग का बन रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट उसका आई डोंट थिंक अनाउंसमेंट होगा. और किसका है? चेल्सी का आई एम श्योर कुछ ना कुछ अनाउंस हो जाएगा. पीछे चेल्सी तो बेस्ट है. उनका 5 प्लेयर पर विंडो को पक्का है, ठीक है, वो साइन करेंगे ही करेंगे भले किसको भी भेज. And by the way, they have put Nicholas Jackson on the market reportedly, and they're still looking for 2 more strikers. तो कुछ भी हो सकता है अगले एक हफ्ते में. अगला एक हफ्ता will be very interesting in the world of football and the transfer market, especially in the European side of things. Do stay tuned. We'll be talking about it all obviously, क्योंकि हमें भी मजा आ रहा है. जैसे आज देखा आपने 20 मिनट से बकचोदी कर रहे हैं बस, और कुछ किया नहीं हमने आज. डू स्टे ट्यून्ड एंड वंस अगेन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि आपको पता चलता रहे कब को वीडियो आ रहा है. हर दिन शाम को वीडियो आता है, ट्यूसडे से सैटरडे. मैं पहले ये भी बता दूं सबको. एंड बाकी शॉर्ट्स वगैरह आती हैं, तो भाई करो यार सब्सक्राइब, मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा है आई एम श्योर. कर दो. चैनल पे वीडियो अच्छा लगा आज वाला तो प्लीज लाइक का जरूर बटन दबा के जाना. बाकी तो थॉट्स अपने कमेंट्स में डाल ही देते हो आप. जो हमारी बातें नहीं पसंद आती हैं उसके बारे में तो आप ज्यादा डालते हो. कुछ अगर अच्छी लगती है उनके बारे में भी डाल दिया करो, हमारा थोड़ा सा एनकरेजमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं तो. बाकी गालियां तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है. चलो बाय बाय.